Hello everyone, this is Usha Pandit, your Mindsprings English teacher. Today I'm going to do My Mother at 66 by Kamala Das. This is the last poem that I'm doing from the grade 12 CBSE book Flamingo for poetry. This is the last poem. So now you have a full set of poems from grade 12. You can go to my playlist and you can look at all the others in case you haven't seen them. Okay, so let's start. So I'll put it on a slideshow and we'll start. So My Mother at 66 by Kamala Das. What you've got there in that picture is Kamala Das and her mother in real. So I thought I'll just put that picture so that you can see. Her mother is much older, of course. She's not just 66 there. But this poem was clearly written when the mother was 66 by Kamala Das. So let's see what this poem is all about. So first we'll do the poet, the summary, and the purpose. That's what we always do. We look at all these three areas so that we understand the poem better. मैं हिंदी में भी बोलूंगी बीच बीच में, लेकिन ये जरूरी है कि आप लोग इंग्लिश सीखे और आप लोग इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो उसका ग्रहण करें, क्योंकि आप इंग्लिश में लिखने वाले हो. तो ये शॉर्टकट मत लीजिए, लेकिन जरूरी है कि आप ये पोम को अच्छी तरह से समझे, इसके जो जज्बात है वो आप एकदम आपकी पकड़ में आए तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे. लेकिन अंग्रेजी के वर्ड्स जो है वो आप प्लीज सीखें. So the poet is Kamala Das, 1934. She wrote novels, short stories, poems in English and in Malayalam, which is her mother tongue, under the pseudonym Madhavi Kuti. तो माधवी कुटी के नाम से इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और कविताएं उन्होंने लिखी है इंग्लिश और मलयालम में. They are original, versatile and have an indigenous flavor of the soil. मिट्टी की खुशबू है, ओरिजिनल है पोएम्स और रिश्तों के बारे में लिखती है वो. Complex subtleties of human relationships. That's what she talks about. If you use some of this language in your exams, you are likely to get excellent marks. Okay, so it's good to know them. Even if you don't use them for this exam, I'm sure you can use them for another one in the future. So it's worth hearing them. The summary is very simple. The poet drives with her mother to the airport to go home to Cochin. एक जर्नी की बात है ये पोम, बस एक रोड ट्रिप, उनकी माँ के घर से एयरपोर्ट तक की दूरी का जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसके बारे में है. She notices her mother's age and distracts herself by watching flashes of life around the car as the car speeds on. At the airport, behind the security check, she is able to feel the familiar nostalgic separation anxiety that she felt in childhood. But she goes with a polite wave and a smile. It's just as simple as that. तो ये है कि एक यात्रा की कहानी है. वो अपने माँ की तरफ देखती है तो माँ बहुत बूढ़ी लगती है, लेकिन वो अपना ध्यान भटकाते हुए वो बाहर देखती है. उसे देखा नहीं जाता तो वो बाहर देखती है. बाहर पूरा जिंदगी से भरा हुआ है, बच्चे हैं और पेड़ है और बस बहुत चहल पहल है. तो वो मौत का जो वो एक चित्र है वहां पे, उससे ध्यान हटा के वो जिंदगी की तरफ देखती है. और कौन है वो उसकी माँ है, बूढ़ी हो गई है. दिस इज व्हाट इट इज इन अ नटशेल. और सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो अपने माँ को देखती है तो उसे फिर से महसूस होता है वो फीलिंग जो वो बचपन में उसे आया करता था, जब माँ उसको छोड़ के जाती थी कहीं भी, थोड़ा सा भी दूर होता था तो वो जो तड़प जो होती थी, जो बच्चों के मन में जो दर्द होता था या जो भय होता था, वो फिर से महसूस करती है. तो ये बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, वो सिर्फ बाय बोल के मुस्कुरा के चली जाती है. द पोएम डील्स विद सप्रेस्ड इमोशन, लव
inability to bridge gaps created in adulthood by physical and geographic distance. The distance is thus widened further and the pain is further deepened. So it's suppressed emotion, emotion that is bottled up. When you don't show emotion, what happens? It gets bottled up. जो भी भावनाएं हैं हमें दिखाना चाहिए, हमें वो उसका जिक्र होना चाहिए जिंदगी में. अगर हमने वो नहीं किया और हमने अंदर दबा लिया भावनाओं को, तो वो एक दर्द बन के बैठ जाता है अपने दिल में. तो ये बात कही गई है. ये दूरियों की बात है, रिश्तों की बात है, और बहुत अहम रिश्ते जो होते हैं, जो प्राइमल रिलेशनशिप्स कहते हैं. द फर्स्ट रिलेशनशिप इज दैट ऑफ द मदर, और वो ही माँ से जब दूरियां बढ़ जाती है तो वो दर्द में बदल जाता है. And that is what it's all about. It's about distance. It's about how distances widen and become larger, and we are not able to bridge them afterwards. Even though we want to, we cannot bridge those distances. This is about that, this poem. So it's an emotional poem. It's very small and it's very powerful. What is the purpose? Why did she write this poem? तो इन्होंने ये poem क्यों लिखी? The poem makes us re-examine our own relationship with our parents and how we move away from them physically and therefore emotionally as we grow up. The love we have settles like a pain in our hearts. तो ये वो पोम है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान डालें. हमारी जो माँ है और हमारे जो पिताजी है, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है. जब हम बड़े होते हैं तो दूरियां बढ़ती है, शारीरिक दूरियां, भावनात्मक दूरियां और स्थानिक दूरियां, सब कुछ बढ़ जाता है. और फिर हमें वो दूरियों को हम जोड़ नहीं सकते. That we cannot bridge those gaps. So that is the pain of this poem. The fact that you love somebody so much but you can't show it. And you have created so much distance in that relationship that you cannot bridge it. This is what it is. Many of us are reduced to tears as this poem with this poem in all stages of our lives. A simple theme of affection and distance, love and pain in a simple poem. It will help all of us heal and also think of how old people suffer isolation. तो जब भी आप ये पोम कोई भी आपकी जिंदगी में कोई भी मकाम पे आप ये अगर पढ़ो तो आपको दर्द होगा, वो माँ के और वो रिश्तों के ओर आपका जो तभी का जो रिलेशनशिप है उसको देख के आपको एक दुख होगा, आपके मन में एक तनाव होगा. अ सिंपल थीम, एकदम प्यार का है और दूरी का है और दर्द का है ये पोम. ओके, एंड इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस हील. हमारे रिश्ते और भी बेहतर हो सकते हैं. अगर उन रिश्तों में दरार है तो हम फिर उन दरारों को हम किस तरह मिटाए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं. और बूढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, उनकी जिंदगी में अकेलापन क्या होता है, तन्हाई क्या होता है, इसके बारे में कहा गया है. So I hope I have expressed it in Hindi and in English, and this is what it is in a nutshell. Okay. So let's get on with the poem. Let's see. My mother at 66. I'm going to read this poem quickly. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. And all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile
and smile and smile. तो बस इतना ही है. एक लाइन वाला पोएम है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इट इज जस्ट वन सेंटेंस, एंड यू विल फाइंड दैट she looks at her mother who's dozing, sleeping, open mouthed. When old people sleep, their mouths are slightly open and face is ashen. The looks have gone, she's become the color of ash. राख की तरह है उनके रंग, उनका जो वो ऐसे बैठे जैसा कोई मुर्दा बैठा है वहां पे. इतनी बूढ़ी हो गई है माँ, और इनको दर्द होता है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपना नजर हटाती है माँ से और बाहर देखती है जिंदगी की तरफ, जहां पे बच्चे हैं और पेड़ है और पौधे हैं और बस चहल पहल है बाहर की. एंड आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद जब फिर से देखती है माँ की तरफ, तो फिर से उसे ऐसा लगता है जैसे कि मौत मंडरा रही है उसके ऊपर. लेट विंटर्स मून कैसे दिखती है वो, जैसे कि पतझड़ में चंद्रमा हो. मौत, पतझड़ इज ऑलवेज, विंटर इज ऑलवेज अ सिंबल ऑफ late death, because the trees become bare and everything is old and everything dies. So late winter's moon is death. And felt that old familiar, एक तभी उनको फिर से महसूस होता है वो पुराना जो दर्द, जब माँ छोड़ के जाती थी, वो बचपन का वो डर कि क्या माँ फिर से वापस आएगी. ये जो डर बचपन में हम सबको होता है, वो उसे फिर से महसूस होती है. लेकिन अब वो डर किसका है? वो डर इसका है कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो माँ छूट जाएगी और मौत जो है वो माँ को ले जाएगा. तो ये है, दिस इज द poem. And at that point the word that comes is amma. Amma जो है वो हमारी जो है हमारे भाषा है. So there is a familiarity, there is love, there is everything. वो उमड़ के आता है, लेकिन उसका it is so sad. The irony is that she could only smile and smile and smile, and she could only say bye, see you. जैसे हम कोई पराये लोगों से बोलते हैं see you soon, यही बोल पाई वो, तो उसकी जो दूरियां है वो मिटती नहीं है. That is what this poem is about. Excellent. So let's look at the title and tone. My Mother at 66. We always look at the title. So if you look at the title, if you look at my, they're talking about possession, isn't it? Belonging, attachment, all that is there in the word my. It shows certain my, belongs to me kind of thing. So there is definitely love there. Birth giving, life giving. When you say mother, it is life giving, shelter, security, food, comfort, protection, love, trust, freedom. Everything is there in the word mother. जीवनदायी है और बस प्यार और प्रोटेक्शन और सब कुछ माँ से मिलता है. And then you have the primal bond. वो पहला रिश्ता है, unbreakable, अटूट, over God. हमारे जो संस्कृति है उसमें हम कहते हैं माता पिता गुरु देवम. इसका मतलब माँ पहले आती है, माँ का स्थान पहला स्थान है. So that kind of a relationship is what we are talking about. When we are talking about duri, we are talking about widening of distances. We are talking about the first bond that is unbreakable. At 66, my mother at 66, old. So when you say old, what do you mean? First of all, it's nearing death, but it's physical, mental, and emotional deterioration. तो एक गिरावट आती है शारीरिक अवस्था में या मानसिक अवस्था में या भावात्मक अवस्था में, हर अवस्था में एक गिरावट जो आती है जब हम बूढ़े होते हैं. इसका जिक्र है at 66. So age is a very sad thing. The speaker is of course the daughter, the setting is the parents' home, and then that journey in the car. तो वो कार में जो जर्नी है वो एकदम बिल्कुल पास है. वो तो हाथ बढ़ा के वो अपने माँ को छू सकती थी, लेकिन वो छू नहीं पाती है. यही तो दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है. ठीक है, तो ये इसका जिक्र है.
जो हम आसानी से जो हम हाथ लगा सकते हैं लेकिन हम लगा नहीं पाते हैं, ये जो दूरियां, जो भावात्मक दूरियां जो बनती है, वो बहुत ही दर्द देता है। इसके बारे में कहा गया है। The tone is conversational. Now when you read it, oh, driving from my parents' house, like just making a conversation, a talk. But uska jo, the emotional impact of that poem is so deep and so profound, isn't it? So that is what you have to see. She's couched it in a very conversational, okay, see you, bye-bye. The beginning and end is all very conversational. But the whole poem has got the weight of tears. इतना दर्द है वो पोएम में. ऊपर से एकदम पोलाइट, एकदम बस जैसे कि हम दोस्त से बात करते हैं, कॉन्वर्जेशनल टोन, मैटर ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेंट, अनअटैच्ड. ऑल दीज वर्ड्स आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा सो दैट यू कैन यूज देम. A touch of emotion is there in that word pain. Otherwise, there doesn't seem to be any emotion in the first part of the poem. Okay? So now let's look at the word clusters. So we always mark clusters. So there are lots of words about age. In this poem, you'll see there's a lot of age words. Doze, open mouth, ashen, as old as she looked, wan, pale. बहुत सारे हैं old age का. A deep sense of sadness and loss is also there. And it foreshadows death, corpse. All of these are loss, age, एक negativity है. Death, of course, there are death words, ashen like a corpse, wan as the winter's moon. This is clearly death. Feelings are there, painful observation of physical looks. She looks at her mother, there is the word pain in it, and then she looks away. Put that thought away. तो जो भी उसने सोचा माँ को देख के, उसने वो ध्यान उसने एकदम हटा दिया, भटका दिया और बाहर देखने लगी. This, guys, is about how when we grow older, we get involved in our own lives. जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ जो है वो उनकी दुनिया होती है. बहुत दिनों तक, 8, 10, 12, 14 साल तक वो माँ आपकी पूरी दुनिया होती है. उसके बाद आप अपने जो दुनिया है वो कायम करने लगते हैं, है ना. You start having friends, you start having activities, hobbies. तो आप अपना दुनिया आप बना लेते हैं. And as you grow older, like Kamala Das, that world becomes stronger. Then you have your own house, you have a husband, you have children, you have your own activities, you have a professional life. All of these things will take you further and further away from that mother. That's what it is here. So when she distracts herself by looking out of the window, it is also symbolic of the distraction of her own, colorful life, of her own energetic life that she is looking at. So we start neglecting our old parents because they are not fun anymore. They have no energy. They are going towards death, and we've got a very, life to look forward to. So that's what it is. So she distracts herself by looking out of the window. Annotation 2. Let's look at the next annotation. So what does she look out as? When she looks out, what does she see? She sees trees sprinting. Sprinting means running. Now the trees are not running. The trees are not running along with the car. The trees seem to be running like this because of the speed of the car. The trees seem to be running this way. Trees are of course not running. They are where they are. But to that word sprinting has got a lot of energy. जैसे मैंने कहा उसकी जो जिंदगी है वो भरपूर उसमें ऊर्जा है. तो वो ऊर्जा की बात है. स्प्रिंटिंग इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वर्ब. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट. जिंदगी बस फूट के भरा है उसका. The children, like how children spill out of the school or spill out of the house, they jump and run and they jump out, isn't it? ये पूरा जिंदगी से भरा हुआ एक इमेज है. But after ab tak, we are just in the car, and now she has come to the security check, and at the security check she has got a barrier. अभी security check के उस पार आप गए तो फिर you cannot walk across and meet anybody on the other side. तो security check एक प्रकार का बाधा हो गया, एक प्रकार का बैरियर हो गया.
और एक तरह का सिक्योरिटी भी हो गया, सेफ्टी भी हो गया कि ये औरत जो अपनी माँ को हाथ लगाने पे या उनको गले लगाने के लिए वो हिचकिचाती है, उन्हें एक एम्बैरेसमेंट होता है, वो एम्बैरेसमेंट के लिए एक बाधा हो गया। अब उसको नहीं करना पड़ेगा, अब उसको जाके माँ से गले नहीं मिलना पड़ेगा। तो एक सेफ्टी हो गई उसके लिए, उसके इमोशंस के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है गले मिले। क्यों नहीं चाहती है गले मिले? इसीलिए नहीं चाहती है बिकॉज इफ शी हग्स हर मदर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाई इज शी सो फ्राइटेंड? शी विल हैव टू ब्रेक डाउन। अगर उसने कोई भी उसने एडवांस किया हाथ लगाने की या एक गले लगाने की या चुंबन देने की या जो भी एक फिजिकल, इफ शी ट्राइज टू ब्रिज दैट गैप, शी विल क्राई, and she will cry in a public place. She does not want embarrassment. So it is easier to say bye. That is what it is. But that pain in her heart is going to grow. It is going to become bigger. So the more you kind of don't bridge, the more you create wider rifts in your relationships, the harder it will be for you to bridge it. So let us look at what it is. You've got image, you've got three children, verbs of energy, I told you, contrast. The mood shifts between the beginning, it was denial. First she looked at her mother, then she looked away. And then after the security check, she's now starting to feel. She's allowing herself to feel because she feels safe. Now I will not have to make any advances. Now I will not have to touch. Now I will not have to break down. Now I will not have to cry. This is what it is. A safety, an emotional safety is what she feels, right? So she looked at her again, wan and pale as the late winter's moon, felt that old familiar ache. Now she's looking at her mother and she's regressing into childhood. How did I feel when I was young and she left me at kindergarten? I wanted to cry. So I'm getting that same feeling of fear that she will never come back. And this time, probably she's thinking, maybe this is the last time I see her. She looks like death is all over her. Maybe this is the last time I'll see her. Now, if you looked at your mother and you felt this is the last time I'm going to see this lady, won't you feel like crying? So this is what it is. तो अगर आपने अपनी माँ की तरफ देख के आपको ऐसा लगा कि हम अब ये मम्मी को हम अब कभी नहीं देखेंगे, ये तो शायद हमारा जो आखिरी मुलाकात होगी, तो आपको कैसा लगेगा? उनको वैसा लगता है, उनको फिर से देख के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बचेगी नहीं। और अनकही कितनी चीजें हैं, unresolved emotions is what she's talking about. Nothing, she's not touched her mother, she's not said anything, there is no bridging of gaps. That's what this is about. But what does she say? She feels so much. But what does she say with her mouth? See you soon. Like we say to friends or strangers, see you, bye-bye, see ya. That's what she does. The only word that shows you the weight of emotion is amma. Because when you say amma, you are going back to becoming a child. You have become again a dependent, completely protected human being. All I did was smile and smile and smile. But what did I do? I just smiled and smiled and smiled. Now, when you say smile and smile and smile, it almost gives you the feeling of when I cried and cried and cried, or I sobbed and sobbed and sobbed. That's what you're getting. तो जो उसने मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, हमें ऐसा लगता है कि वो ये बोल रही है कि मुझे रोना आया और मुझे फिर से सिसकियों की एक झलक है, वो स्माइल एंड स्माइल, सॉब 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 में का झलक है। तो ये बात है। सो सिक्योरिटी चेक इज सेफ, फिजिकल डिस्टेंस, चाइल्डहुड फियर मैंने बताया, सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं उसे, यानी कि जब हम सेपरेट होते हैं अपनी मम्मी से, जो एंजाइटी, जो तनाव होता है, उसे हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। अम्मा इज अ वर्नैक्युलर वर्ड, वर्नैक्युलर यानी हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें से लिया गया है अम्मा।
अम्मा और मदर में फर्क है. मदर इज पोलाइट, मदर इज एजुकेटेड, मदर इज अ सर्टेन प्रिटेंस. बट अम्मा जो है वो एकदम बस मिट्टी से जुड़ी हुई है वो वर्ड अम्मा. So closes the gap instantly. When you say amma, it's close. It suddenly becomes close. Back to the roots. So that's what it is. And she says, say you, so that is the irony of it. And that is the pathos. And that is the tragedy of it. Felt, said, and did. So you have got three things. She felt something, and she said something, and she did something. वो तीनों में कोई मेल ही नहीं है. कुछ महसूस करना और फिर कुछ बोलना और फिर और ही कुछ करना. तो इट्स सॉर्ट ऑफ यू सी द डिसफंक्शन, यू सी द डिस्कनेक्ट इन दोस थ्री. दे आर अनब्रिजेबल गैप्स foreshadowed by ache, fear and pain. See you is formal goodbye or formal or an informal even kind of goodbye, normally to friends or strangers. Smile and smile and smile, as I said, sounds like cry and cry and cry. The weight of tears is there in the ending. अश्रु से भरा है वो एंडिंग. जो एंडिंग उन्होंने कॉन्वर्सेशनली स्टार्ट किया लास्ट इवनिंग व्हाइल ड्राइविंग, लव लव, जैसे कि किसी से ऐसे ही बात कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, वहां से शुरू करके यहां तक आई है जहां वो बोल नहीं पाएगी. इतने आंसू है इसमें. Emotional load of the poem. So this poem is emotional, fully emotional. Content of the poem, what is low? So content तो कुछ भी नहीं है, it is just a journey, but the emotional load is huge. It's just a short trip, but it is how it is told that is important, and the words in the poem and the emotional load is big. Bottling up pain, fear, love causes trauma. तो अगर हमने कोई भी चीज दबा के अंदर रखा तो फिर वो हमारे जीवन में बहुत दुख लाएगा और निशान छोड़ेंगे हमारे आत्मा के ऊपर. तो ये बात है. डिस्टेंस इज अ टेरेबल स्टेट, स्पेशली विद लव्ड वंस. अगर आप अपने बच्चों से या आप अपने माँ से या अपने कोई बहुत करीबी रिश्तों से अगर आपने दूरियां बनाई तो उसका जो दर्द है वो बहुत भयानक है. There is progression of feelings in verbs and actions. So if you look at the verbs, driving, saw, realized, put away, looked out, standing, looked again, felt, said, did, smile. पूरा एक journey है. And there's a sadness. It's passive. वो कभी हाथ बढ़ा के अपने अम्मा की ओर हाथ नहीं बढ़ाती है. That is the tragedy. There's no touch. The pathos is not being able to reach out, although there is no distance in the car. Then पास बैठी है, but she could not touch. She allowed herself to feel only when there was the security check barrier. See the problems. The barrier of the security check is actually a safe place to feel. She has to regress into childhood. She has to become a child again in order to dig out that feeling. इतना deep उसने दबा के रखा है वो भावना को of love. There is a bigger loss for the daughter not being able to touch her own emotions. अपने ही भावनाओं को वो उसको बस खोज के निकालना पड़ता है. It shows the extent of bottling. It will burst into tears. जब तक आप बहुत सारा आप रो के आप वो दर्द को आपको निकालना पड़ेगा. शायद ये जो रिश्ता है, शायद वो माँ के मरने के बाद ही इनके आंसू निकलेंगे, ऐसा लगता है. तो एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है. I mean, poem है. The whole poem bears the weight of tears. Devices बहुत सारे हैं. Similes है, like this is like as the pale winter's moon, like वाली जो उपमा जो करते हैं उसको हम simile कहते हैं. Contrast, trees and this, and then you have the mother and the imagery of death is a contrast. Symbols जो है वो security check मैंने आपको बताया. Journey खुद एक यात्रा है, conversational tone से सिस्कियों तक की जो यात्रा है, एक छोटी सी यात्रा है, लेकिन उसमें कमला दास ने इतनी सारी भावनाओं को उसने भर दिया है.
So journey is mere observation to emotional crisis. Trees and children, energy, life, and also the speed of the car is the passage of time. जो वक्त जो निकलता है वो वापस नहीं आता है फिर से, और उसकी वो तेज रफ्तार से आगे निकलती है समय. So this is something that you can see is also symbolic. The life pulsing outside the car. बाहर का जो चहल पहल है वो जिंदगी का एक प्रतीक है, और जिंदगी में जो पैशन है, जो ऊर्जा है, उसका एक प्रतीक है. And all that is very easy to get distracted with that and forget this lady who's looking like a corpse anyway. But we cannot let her go. She is the mother, isn't it? This is the tension. ये है संघर्ष इस poem का. Anaphora is when you repeat all I said and all I did. When phrases are repeated again and again, that is called anaphora. Polysyndeton is smile and smile and smile. जो and जो लगाते हैं एक ही repetition में emphasis के लिए, उसको फिर से दोहराने के लिए, उसको हम polysyndeton कहते हैं. And accumulation, ये जो ढेर बनाते हैं हम, van, pale, latest moon, ये जो दर्द के जो लफ्ज है उसका एक ढेर बनाया गया है. So there is a huge accumulation of negative feelings of childhood fear, pain, late winter's moon, and this devices to show, to emphasize. So these are the various devices that she has done in the poem. Structures and effects, as I told you, it's a single unstopped line, one sentence, that's it, and one journey. Enjambment is where the lines don't stop. So you've got parents home, and then you've got Friday morning, and then you've got mother beside me. It doesn't stop at the end. It keeps on flowing until it comes to the end. That's called enjambment. Don't stop at the end. Shows the rush of feeling also, isn't it? Free verse, no rhyme, scheme, prosaic tone, conversational, single word, amma. Sitting alone, it does 2-3 things. It shows isolation, कि that lady is alone, उसका अकेलापन का जिक्र है, वो एक शब्द जो अकेला बैठा है. और जब अकेला कोई भी चीज को हम अकेला बिठाते हैं तो फिर highlights the word, it makes it more meaningful, और भी महत्व मिलता है उसको क्योंकि वो अकेले जैसे स्पॉटलाइट में बैठा है. तो ये 2 मीनिंग है उस वर्ड अम्मा के. और अम्मा तो अपना होता है, अपने जैसे मैंने कहा वो मिट्टी से जुड़ी है वो रिश्ता. हमारी मिट्टी, इन दिस केस इट्स नॉट जस्ट धरती की मिट्टी बट हमारी मिट्टी से जुड़ा है वो अम्मा. Sibilance is seen in the repetitive S. तो बहुत सारे words है that start with S. Sprinting, spilling, security, standing, said, see, soon, smiles. जो ये जो sibilance बोलते हैं इसको, that is also about सिस्कियास, sobbing के जो sounds है उसमें, तो that is उसका एक जिक्र है. So structurally also it's a very smart poem, very clever and very good effects. Okay, so themes guys are about old age, geriatric problems. Geriatric मतलब जो बुढ़ापे में जो problems होता है उसे हम geriatric कहते हैं. Old parents, alone, बहुत सारे ऐसे घर है आजकल जहाँ पे बच्चे सब बाहर देश में है और माँ और बाप जो है बूढ़े हैं जो अकेले अपने घर में रहते हैं. तो ये है एक प्रॉब्लम है. ये इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल, जो स्थानिक और शारीरिक जो डिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप्स में, वो दरार जो होती है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. इमोशनल डिस्टेंसिंग, जो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं. तो इनके जो चिन्ह क्या है और किस तरह से हम इन चिन्हों को पहचान के हम उसे अवॉइड कर सकते हैं. हाउ कैन वी मेक श्योर दैट आवर रिलेशनशिप्स आर हेल्थी? हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पीपल? दिस इज अ बिग वन. एंड आइसोलेशन, अकेलापन, बुढ़ापे में जो अकेलापन होता है, जो तन्हाई होता है, इसकी बात है यहाँ पे. ये हमें प्रेरित करती है कि हम इन समस्याओं के तरफ या इन समस्याओं के ओर हम ध्यान दें और हम सोचें. All the poems in your books, guys, are for you to think. It's not just to write an exam and get 90 marks.
It is for you to be educated. It is for you to be better citizens. It's for you to have better relationships. It's to build character, isn't it? So don't miss that bit. Life links of poems is the last one that I always do. Kis tarah se this poem affects my life? How does it influence my life? How does it make me a better person? So my personal response will always be dependent on my personal relationship with my mother, which will not be like your mother's, right? So that is something that you should think about. You might get a question on a personal response. Some questions to ponder on: what is your relationship with your own mother? Are you physically, mentally, emotionally close? आपका रिश्ता कैसा है? क्या आप अपने माँ को गले लगाते हो कि आपने बहुत साल पहले आपने छोड़ दिया? गले नहीं लगाते, सिर्फ हेलो मम्मी कहते हैं, खाना खाते हैं और निकल जाते हैं. क्या है आपका रिश्ता? मेंटली, मानसिक तौर से क्या आप बात करते हो उनसे? उनका जो ख्वाहिश है, उनके जो सपने हैं, उनका जो दर्द है, उनका जो प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में कभी बातें होती है? और आर बी इमोशनली क्लोज? भावना से क्या हम एक दूसरे से जुड़े हैं? रिजॉल्व टू गिव योर मदर एंड फादर अ हग एवरी डे. तो अगर आप 18 बरस के या 19 या 20 बरस के हो, अभी आप 12th ग्रेड में हो, तो जरूरी है कि आप रोज अपनी माँ और डैडी से आप गले लगे, आप उनको हग करें, आप उनके शारीरिक तौर पे आप उनसे जुड़े रहे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो वो जो मानसिक और भावनात्मक जो दूरियां हैं वो बहुत जल्दी आ जाती है और फिर उसे कमला दास की तरह वो हम मिटा नहीं पाते. That is what this poem is about. You will not be able to bridge those gaps if you have gone away from them mentally and emotionally. It starts with physical distancing. Okay. What are the needs of aging parents? Is it only economic? Is creature comforts enough for a good life? अभी बहुत लोग जानते, ओ ठीक है, मम्मी के लिए हमने एक घर खरीद के दिया है, उनके लिए एक गाड़ी और ड्राइवर भी रखी है हमने, बहुत हो गया, we have taken care of them. ये जो taking care है, इसका मतलब क्या है? Is it only financial? कि उन्हें पैसे दे दिए, घर दे दिया तो बस? That's the question to ask. Is it enough? Creature comforts. Like how you would keep a pet dog. You will feed it and take it to the vet and you'll give it a bath. Is that enough for a human being? For someone who is your mother and your father? That is the question that we are asking. If you have not seen Sharma Ji Namkeen, take a look at that movie because it talks about exactly this. He's got everything, but his sons don't understand his needs as a human being. तो ये जो पहचान हमें होना चाहिए, ये अगर आपके अब की उम्र में अगर आपको ये समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है. Kamala Das has done a great job. Okay. So what is the value of a hug? अब हमारी जो दुनिया है वो डिजिटल है, हम किसी से मिलते ही नहीं है. हम सबको मिलते हैं अपने फोन के ऊपर, या तो हम बात करते हैं, या तो हम वीडियो कॉल करते हैं, या तो हम सोशल मीडिया पे मिलते हैं. We don't seem to be having the human touch. And definitely our parents are part of that problem. They are not the problem, but our world is that problem of digitalizing. तो ये डिजिटल वर्ल्ड में एक आलिंगन का, एक हग का, एक गले मिलने का क्या अहमियत है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है दिस पोएम, especially in the digital world which has become non-personal or impersonal relationships. So this is something to remember. How can we show the elderly we care? This is a big one to think about. What are the various things we can do? How can we alleviate their isolation? Alleviate यानी कम करना. किस तरह से हम उनकी तन्हाई, उनका जो अकेलापन है, how can we make it lesser? What can we do about it? Research by interviewing geriatric doctors. अभी जो बूढ़े बुजुर्ग के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मिलो, या ओल्ड एज होम वार्डन्स जो है उनसे मिलो और उनसे बात करो, उनको इंटरव्यू करो, समझो कि ये जो इनमेट्स है वहां जो रहते हैं, अकेले रहते हैं बुजुर्ग, उन पे क्या गुजरती है, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स. दैट्स अ गुड वन टू डू एज अ प्रोजेक्ट फॉर योर स्कूल. स्टार्ट अ प्रोजेक्ट कॉल्ड सिल्वर केयर. सिल्वर यानी सिल्वर किसको बोलते हैं? सिल्वर सिटीजन्स या सीनियर सिटीजन्स जो 60 के ऊपर है, जो बड़े बुजुर्ग है, उनको हम सिल्वर कहते हैं.
क्योंकि उनका जो केश है वो सिल्वर है ना. So therefore, start something like silver care. Think of some things to do with this poem if you're in the 12th grade. That's a great one to do. So people, I hope you enjoyed this lesson that I gave you. Remember that meanings and all anybody will give you, but you must understand the soul of the poem. इसकी जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं इसमें, ये आपको समझने की जरूरत है, वरना वो मीनिंग और लाइन के मीनिंग और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह वो तो आपको आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. बट इसमें जो मुद्दे हैं, मेक श्योर यू recognize that, make notes, think about it, write the main points, and then go for your exam. So best of luck, people. Look at all the other poems also on my playlist. And I'm going to do a video on how to answer your questions. I'm trying to do that for you as before your exams. So keep tuned in. Keep smiling. Best of luck.